Today's enlightening entertainment will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Auxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu and Thai. मुमताज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बसीरत भरी तफरी में खुश आमदीद। आज हम सफ़र करेंगे शुमाल मगरबी पाकिस्तान में वाक़े कोहिस्तान के दिलकश इलाके का। कोहिस्तान, जिसका मतलब पहाड़ों की सरजमीन है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा का एक अनोखा ज़िला है। ये अपने खूबसूरत पहाड़ों और सबसब जंगलात की वजह से जाना जाता है। अजीम दरिया सिंध कोहिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मशरकी हिस्सा सिंधी कोहिस्तान कहलाता है, जबकि मगरबी हिस्सा सवात का कोहिस्तान कहलाता है। इस इलाके के साथ साथ कराक्रम हाईवे भी चलता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची तामीर शुदा बैनुल अक़वामी सड़क है, जो कि 4693 मीटर की बुलंदी तक जाती है। ये सड़क इन कदीम रास्तों में से एक की निशानदेही करती है, जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता और तिजारत के लिए इस्तेमाल होता है। कोहिस्तान के मुकाम पर हिंदुकश, कराक्रम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मिल जाते हैं। अपने बेहतरीन नबाताती और हैवानियाती माहौल के साथ कोहिस्तान घर है नायाब अनवा का, जैसा कि मगरबी ट्रागोपान तीतर और बर्फानी चीता। कोहिस्तान के लोग सादा और पुरमसरत जिंदगी गुजारते हैं। वो अपने मेहमानों का पुरतपाब इस्तकबाल करते हैं। कोहिस्तान लेख मासमान हानक बेस बुट से शुक्रिया अदा थोन सदी कयोनगी बेस से शुक्रिया थोन शियादिक हयोनगी से शुक्रिया यहाँ बे खुशहाल आनस सो इंशाल्लाह असो से ताउन थुई। आइए अब मुलाकात करते हैं जनाब तालिब जान से, जो डायरेक्टर हैं सिंधी मुआशरती बहबूद और तरक्याती इदारे के, जो कि हमें कोहिस्तान के बारे में मजीद बताएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and mighty, on behalf of Kohistani community in these mountains, I'm thankful to SupremeMasterTV.com for providing me this opportunity to say something about Kohistan, its people, its history and its culture. Kohistan has an area of 7,492 square kilometers, and it has an elevation of between 2,000 to 5,000 meters. The people of Kohistan have their own specific culture, their own history, but unfortunately Kohistani history is not recorded, and that's why the history of Kohistan is a mystery. Nobody can say with certainty from where these people came and when they started to live in these mountains. But what the people say about their own origin, there are two different views. The first view says that Kohistanis are the descendants of Quraysh clan in Saudi Arabia, and the second view is that Kohistanis are the people who migrated to this area from Afghanistan. Now Kohistani culture, Kohistan has a very specific culture, and it is somehow resembling with northern areas of Pakistan like Gilgit-Baltistan, but it is different from Khan's culture or the culture of different people living in the lower parts of Pakistan. So one specific thing I would to mention here that is a part of the culture is the exchange marriages. And this is a word you might have not heard before. Exchange marriages are the marriages which for example, a person A gives the hands of her daughter to a person B's son, and similarly a person B gives the hands of his daughter to the son of person A. And this is the value very much profound in the area. I will also talk about the poetry of Kohistan. Kohistan has a very different sort of poetry, because a poet must be a singer. And the second important thing is that in Kohistani poetry, almost all of the poets and the singers, they are illiterate. So
the poet must be a singer. A couple of languages are spoken in the area, like Indus Kohistani, Shina, Bateri, and also Pashto. So now I will ask my friend Mr. Zia. He will sing a song in Indus Kohistani language, and hopefully I will translate it. Ye baziga khapa ho gole minara ga sapondo baziga khapa ho gole o baziga khapa ho gole minara ga sapondo baziga khapa ho gole begona nere khapa kanra mata qsim chelano mijil mati badiwan ti soda mekane oyan chugul chugul karan yen tarashta ho gole o baziga khapa ho gole Minaraga sapondo baziga khapa hogole Chogoli karata tige nibai divar pero me baji manata tige Aistala tun sagande mige niti razi tine ke sajoda hogole O baziga khapa hogole Niti razi tine ke sajoda hogole O baziga khapa hogole Minaraga sapondo baziga khapa hogole Invite Mr. Hassan Khan. His mother tongue is Shina, so he will sing a song in Shina language. Ho muqaidi hanu susne kala o maja bastadi dan lukamos dua o maja mombe sakunano samshaw sanam toy mohabbat saza o maja यार मोटकम तो नुशा समाने यूं जिना हम तो जने शिरी हर वर्ष गायु मजना कनी गमड़ बग्यास मारे जीव यार मानोस मारुन सुकुनी जिनो शे दुनिया तेरे तमशा सनी तुझ यार मोशे दुनिया तेरे तमशा सनी तुझ यार बस हमें गिनी भाजा सनी तुझ यार तैसोली सनन तमशा मगिनी मबिले शासनी तुझ यार हाय तुझ्या गोड खुशी मी किर्या साजा बिलिना थोयार माने रोटा खरीज जुदा बिलिना तुरा पसाद बयार सुर तजमीरो मी किर्या खरीसा बिलिना In Kohistani culture, we have another very much important aspect. The people do have very great respect to the guests, and people are very much hospitable. This culture is the least exposed culture in the world, because in Pakistan this is the 110th district in the north, and we are very much away, bounded inside the mountains, and very few researches have been carried out about the history and culture of this area. Shina is the very much established language. By the grace of Almighty Allah, we have been succeeded to devise an orthography system, writing system for Indus Kohistani language. And we don't have very documented proof of Kohistani culture, like music, musical instruments, the poetry, and handicrafts, and the other very much specific tools. But we have a plan ahead to document the Kohistani culture and the Kohistani cultural segments, and to share it with other world. Let me talk about a little bit about the living style of the people and their livelihood. Majority of population live in the valleys, very beautiful valleys, where people have agricultural lands. In agriculture, people have two crops, like maize, corn, and wheat. These are the two crops people grow in a year, and people mostly live on upper elevations with houses made of mud and stones, and very few people have concrete houses having cement and concrete. During the summers, people migrate from lower elevations to upper elevations because of the seasonal extremes. Because in the lower regions we have during the summer very warm weather, and people cannot tolerate that, and people have the least resources than during the summer, so they migrate to the upper elevations. मकई और गंदम के अलावा यहाँ चावल, लोबिया, आलू
और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इलाके में मौजूद कई नदियां फसलों के सैराब करने के लिए पानी मुहैया करती हैं। जनाब तालिब जानी और गांव के एक लड़के ने हमें कोहिस्तानी नाच का एक नमूना भी दिखाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब तालिब जान और कोहिस्तान के दासू कस्बे के रहायशियों का कि उन्होंने कोहिस्तान की तहजीब से हमें मुतारफ करवाया। दुआ है कि जन्नत की बरकत से आपकी सरजमीन के खुलूस भरे लोग अमन में जिंदगी गुजारें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। आगे आ रहा है हिकमत की बातें प्रोग्राम देखने के लिए फौरी बाद काबिल गौर खबरों के सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। दुआ है कि आपका दिल मसरत और आजादी से भर जाए। Thank you esteemed viewers for joining us today. Coming up next is the words of wisdom after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your heart be filled with joy and freedom. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.